Hello, friends. Welcome to my channel, Fintalk with Hitesh. And in this series, where we are decoding SIFs for you, we have one more fund manager who is doing a brilliant show at Mirae Mutual Fund under the brand name of Platinum SIF. Today, I have the pleasure of hosting Mr. Gaurik Shah. He's a CFA and a senior vice president, equity investments at Mirae Asset Investment Managers India Private Limited. Just to introduce Gaurik sir brings over 19 years of experience in the financial industry. Prior to this assignment, Gaurik sir was associated with ASK, Long Short Fund Managers Private Limited, as a senior vice president, ASK Hedge Solutions. He was also associated with Avendus Capital Public Markets Alternate Strategies LLP as a vice president, fund management, overseeing an AIF Category 3 fund. Uh, Mr. Shah's earlier experience includes managing the AIF Category 3 fund and advisory portfolios at Pro Alpha Capital. He has also managed an Asia Pacific equity index focused managed futures slash CPA fund at Monsoon Capital in Singapore and worked as an associate trader on the Delta One desk at RBS. So in Hong Kong. So welcome to our show, sir. Thank And you. I just really, realized that yeah. when you were saying all of the names are tongue twister. Yeah, I can feel that. But I can tell you, sir, that while I was reading this profile, it was like you were a godsend avatar for this world of SIF. Uh, all the while, all the 19 years you Uh, have worked on this field, so perhaps you would be the best position to explain a lot of things which are yet unclear in this evolving field of SIF. So welcome to my show, sir. तो सर आज का जो हमारा एजेंडा है हम बेसिकली इस डिकोडिंग एसआईएफ इज अ सीरीज दैट वी हैव okay. रिसेंटली स्टार्टेड वेयर हम लोग सारे फंड हाउसेस जो कि एसआईएफ स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हैं उनके फंड मैनेजर्स को इंटरव्यू कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज देयर स्ट्रेटजी ऑल अबाउट हाउ आर दे मेकिंग रिटर्न्स what kind of a risk profile does the product contain where do we position it किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होता है so this is what I'll try and cover in today's discussion sir. So coming to the first part, sir, कि just a very brief background कि सर ये SIF की जरूरत क्यों पड़ी? Why did the mutual fund industry come out with SIF as a product? See, I think first of all, it's not mutual fund industry which has come out as the product. It's like a gift to mutual fund industry by SEBI. Yeah. Uh, so it's basically it's like derivatives was there in Indian markets in since 2001. It's almost 25 years journey in derivatives for Indian markets. Indian markets in derivatives specifically has one unique feature, which is single stock futures and options. We most of the players, traders or investors who are there in this space right now have known always equity derivatives means there are single stock futures and options are always there, but they are very unique to India. They are not liquid at all in other markets. When they speak about equity, if you FNO, that's broadly only index. We have single stock futures and options, so there is a depth in the market. There are a lot of players who are exposed to it because there are a lot of prop book guys who have traded it. There are a lot of hedge fund guys who have traded it. Mutual fund industry broadly was not participating in the FNO market in any meaningful way Yes. because of the regulatory framework in which they were investing. At the same time, so after COVID, what happened was there was kind of an explosion of retail. Uh, I wouldn't even call traders, but basically retail players who were started dabbling into FNO market, which they and since they did not have any kind of an structured product or more regulated product, they more or less they kind of were trading based on the advice of advisors, fin influencers, and there were a lot of shady characters which had got into it, and it was not a very desirable situation. So I think that's where this thing entire thought process would have started in CB's mind that they should provide a safe regulated environment for the retail players also to participate in the derivatives market. And I think this space has also matured enough where we have enough data in terms of underlying strategies, what kind of expectation could be set. For retail investors, probably a lot of things are new.
but there are a lot of us from the derivative space which have enough experience and data on what kind of risk reward could be expected. There is something always on paper. There is we can see something, but reality is something else. There's always learning curve involved when we start doing something new. So that way, I think SIF right now is the right product for the right environment, where mutual fund industry also get a toehold in this space, as well as retailers get a very safe and regulated vehicle through which they can participate in it. Right, sir. So, sir, every product when it comes out has a defined objective. Yeah. So, for example, कुछ फंड्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम जनरेशन करना, किसी का होता है रिस्क मैनेज्ड ग्रोथ लाना. Some say that they would protect the downside. Some say that they would help in doing wealth creation over a long period of time. तो सर, आपने जो platinum hybrid long short SIF लाया, I mean, what was the objective of that fund? See, basically, objective of this fund is to have a conservative returns with a limited downside. Okay, the way we have, so right now there are a lot of things which are, let's say, the products like arbitrage fund, right? They arbitrage fund basically depend on the underlying interest rates. The interest rates starts coming down, then your arbitrage returns will also start coming down. Yes, Everyone sir. right now sees arbitrage return at 7.5%. I think broadly in the range of last year was 7.5. Right now they've come up to around 6.5. But prior to 2022, they were in the range of 4%. Right? So that kind of movement will be there in arbitrage fund. At the same time, that fund, which was another source of an fixed income kind of a less risky return profile investment options, they have a very huge tax disadvantage. Yeah. So in that space, we thought using the derivative strategies, we can add 2-3% alpha, which in a 5-6% base rate scenario can have it's a meaningful alpha. Yes. Uh, Obviously, against that, there is some risk involved. Arbitrage is broadly non-risky, means drawdown expectation is very low. In fact, but having said that, there are days on a daily day-to-day basis, you would even see a negative days in arbitrage. Yeah. Uh, so there is some risk involved over here, but we have tried to keep it to the minimum. But so what I clearly understand is कि सर आपने इसको conservative investors with moderate return expectation but with very limited downside is what is the objective Yes, that you are trying to yes, achieve from this fund. yes. तो सर इस फंड का अगर मैं कहूँ कि बेंचमार्क क्या होगा या क्या होना चाहिए, बिकॉज सेबी भी बड़ा कंफ्यूजिंग कैटेगरी एक ही होते हैं लेकिन उसमें 10 फंड होते हैं सेम नाम से आते हैं और बेंचमार्क देख के भी आप समझ नहीं पाते हो. सो व्हाट इज द ऑफिशियल Yeah, I बेंचमार्क ऑफ think दिस फंड एंड so. व्हाट शुड बी द Benchmark. बेंचमार्क? First of all, why the benchmark are very important in the mutual fund space? Okay, there is something in the mutual fund space. Benchmarks are very important because what had started happening, this is very early days of mutual fund, is that someone comes up with a certain kind of fund and showing a very high alpha. Okay, but if you go deep down, then you realize that he's taking more risk than what he was supposed to take in that fund, right? Then Yes. investors alpha is shown, but it is from a different source of risk, and investor probably investing in that fund would not want that kind of a risk. Now with SIF, especially with the derivative strategies, every strategy is going to be different. The targets are going to be different. Means source of alpha is going to be different. Source of risk is going to be different. और काफी सारे रिस्क ऐसे होंगे जो काफी लंबे समय तक दिखेंगे ही नहीं. कि आपका, जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं कि कवर्ड कॉल और कॉलर स्ट्रेटेजी है, राइट? सो कवर्ड कॉल और कॉलर स्ट्रेटेजी में डिफरेंस क्या है? कॉलर स्ट्रेटेजी में हम लोग पुट बाय करते हैं. कवर्ड कॉल Okay. स्ट्रेटेजी में नीचे का पुट बाय नहीं करते हम लोग. तो उससे होता क्या है कि मंथ ऑन मंथ जो कॉलर ट्रेड कर रहा है उसका रिटर्न कम दिखेगा. बहुत सिमिलर स्ट्रेटेजी है. दोनों स्ट्रेटेजी हम लोग स्टॉक बाय करके कॉल बेच रहे हैं. ठीक है, तो कहने को तो बहुत सिमिलर स्ट्रेटेजी है. जो सिर्फ कवर्ड कॉल कर रहा है उसका रिटर्न अच्छा दिखेगा ऑन मंथ बेसिस, बिकॉज वो प्रोटेक्शन पुट का खर्चा नहीं कर रहा है, Correct. राइट? बट एक ऐसा टाइम आएगा, वो 4-5 साल में एक बार आता ही आता है,
जबकि वो पूरा जो Absolutely. अपसाइड होता है, वो जो अल्फा क्रिएट किया रहता है, उससे ज़्यादा वो लूज कर लेता है 1-2 महीने। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी भी समझना पड़ेगा। अब इसमें बेंचमार्क आप जो टिपिकली सेबी वाले बेंचमार्क्स होते हैं, सेबी रिलेटेड बेंचमार्क्स होते हैं, दे आर मोर लीनियर बेंचमार्क्स। दे डिपेंड ऑन हाउ मच पार्टिसिपेशन यू हैव टू स्पेसिफिक साइड ऑफ अ market. Let's say there is a 50-50 benchmark which we have. That means that you have 50% participation in the equity market and 50% comes from the debt market. That's what the expectation is. But our net delta is 25%, and then on top of that, options की वजह से वो non-linearity आती है. So ideally, I think benchmark is going to be very difficult. Each SIF is going to be unique, and that's not a bad thing. Okay, you want some diversity. तो सब कुछ Yes. सेम प्रोडक्ट आएंगे तो फिर फायदा नहीं है कुछ. Correct. सो देयर हैज टू बी सम डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी इन स्ट्रेटेजीज इटसेल्फ. सो एंड इन्वेस्टर हैज टू जज कि कौन सी स्ट्रेटेजी उनके पोर्टफोलियो में फिट बैठती है. Right. 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 तो सर अगर मैं सिंपली पुट मतलब मैं समझा कि सेबी ने हमें 50-50 वाला बेंचमार्क दिया है, जो कि शायद सभी फंड को दे रहे हैं, लेकिन लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, देन परहैप्स आई वुड से दैट मे बी एफडी इज अ बेटर बेंचमार्क फॉर यू या, एंड एफडी रिटर्न. तो एफडी रिटर्न्स और आर्बिट्राज रिटर्न्स टिपिकली उससे ही वो द वे आई एम थिंकिंग इज कि यार मैं कोई भी बेंचमार्क रखूंगा, उसका रेलेवेंस कम है. ज़्यादा रेलेवेंस है जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है उनका क्या रिटर्न है. कल ऐसा सिचुएशन आता है कि एफडी रेट्स गो थ्रू द रूफ, 12%, 15% हो जाते हैं. वी आर इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. दैट टाइम ओके. इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. राइट. ओके. So which is why you said that arbitrage के returns को beat करना is हाँ, perhaps major objective. राइट. अगर कल जाके आर्बिट्राज रिटर्न्स गो डाउन टू अराउंड 22 लेवल्स where 3-4% होता है, then it doesn't is not a competing product for me. It doesn't matter. But My returns are still going to be in this range, yeah. but Okay. So, sir, coming to the strategy that you are using for this fund, I have spoken to multiple fund managers, and each one has his own strategy. कोई कहते हैं कि भाई हम डेट से रिटर्न बनाएंगे, तो कोई कहते हैं कि हम उसमें भी क्रेडिट रिस्क लेकर के रिटर्न बनाएंगे, तो कोई कहते हैं कि हम डेरिवेटिव स्ट्रेटजी से रिटर्न बनाएंगे, कोई कहते हैं हम स्पेशल सिचुएशंस यूज करेंगे, कुछ ओपन इक्विटी रख लेते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स that an ordinary investor, or let's set aside ordinary investor, even an advisor or a distributor is not able to understand just by reading the label of a product कि इसमें कर क्या रहे हैं और रिटर्न बन कैसे रहा है. So I would request you sir कि if you can take out some time and talk about the strategy कि आप कहाँ से रिटर्न बना रहे हो, what is your source of returns and alpha. see, what we have chosen is to go with the collar strategy as a backbone or the main centerpiece around it, which this entire fund revolves, right? Now, collar strategy is a strategy which probably would not fit in any other vehicle or any other structure. अगर आप प्रॉप बुक में कॉलर स्ट्रेटेजी करने जाओगे तो उतना रिटर्न नहीं बनेगा. इट्स अ वेरी कैश इंटेंसिव स्ट्रेटेजी. आपको अंदर अंडरलाइंग स्टॉक्स बाय करने हैं. प्रॉप बुक्स में आपको कैश, लेस कैश इंटेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए होती है. अगेन हेज फंड्स में क्राइटेरिया डिफरेंट है. यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मैंडेट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ 25% है शॉर्ट करने की. देन दिस इज द स्ट्रेटेजी विच फिट्स परफेक्टली इन दैट. आई हैव ब्रॉडली जो आपने जो स्ट्रेटेजीज बताई, एटलीस्ट ऑन इक्विटी साइड आई हैव ट्रेडेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ. एवरेज स्ट्रेटेजी, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजी का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई रिस्क रिवॉर्ड होता है. देयर इज अ सोर्स ऑफ अल्फा, देयर इज अ सोर्स ऑफ रिस्क. And for us, guys like us who have been in this field, the main rule probably is to mix different kind of strategies to create a product which is matching with the mandate of this fund. Probably ये strategy, the ये जो conservative equity conservative funds है उसमें this fits. Probably when we come out with the equity long short, this will not have any relevance. There I cannot do collar strategy. So collar strategy is a strategy which is basically, there's a 3 lakh strategy. आपने stock खरीदा हुआ है. If you can show up that slide.
यस, वो वही मैं सर आ रहा था कि आई हैड अ स्लाइड फ्रॉम योर साइड, वी कैन टॉक अबाउट दिस स्लाइड सर. Yeah. यस सर. So we have just given here an example of a collar strategy. Okay, this is a hypothetical example. In real world, more or less it's a similar thing, just numbers are different. So let's say we buy a stock which current price is at 2000 rupees. Okay, I sell a call which is 3% above the price of the current price of the stock, which is let's say 2000 and 2250 का stock call मैंने बेच लिया. What it means, उसके लिए मुझे क्या मिल रहा है, 120 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है. What it means that I am getting 120 rupees upfront, but what I am giving up on that is, अगर 200 2250 के ऊपर जितना भी प्राइस आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी पार्टिसिपेशन इन दैट. मेरा राइट. मैक्सिमम प्रॉफिट 250 हो गया, एक महीने में मेरे को सिर्फ 250 रुपया मिलेगा, प्लस 120 रुपया जो मैंने प्रीमियम प्रीमियम दिया. कमाए. सो दैट बिकम्स योर कवर्ड कॉल. राइट. सर एक चीज जो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इज दैट कि कवर्ड कॉल इज अ हेज स्ट्रेटेजी, कि आपने स्टॉक बाय किया, कॉल बेच दिया तो वो हेज हो गया. बट वैसा नहीं है, क्योंकि आपका नीचे का तो पूरा ओपन ही है. अगर मैं जगह मार्केट 50% स्टॉक गिरता है, तो आई हैव टू टेक दैट 50% हिट. ओनली थिंग विच आई सेव इज ऑन द premium प्रीमियम. which I got, which is a small amount. So it's यस. not a hedge strategy. So if I have to come out with a product which is conserved and which I have to be fairly certain about the on the loss side, then I have to buy the protection, करेक्ट. right? And that's why we buy a protective put. राइट. That's the difference between covered call and a collar strategy. So in this case, we buy a put which is, let's say, around 1700 rupees, right? करेक्ट. 1007. This is a hypothetical. In real life, we will buy a put which is not so much out of the money. We will buy a put which is at the around 5% level. So अगर करेक्ट. 1700 से नीचे जाएगा जो भी है, मेरा लॉस उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, 300 रुपये से ज्यादा यस. लॉस नहीं होने वाला. यस. राइट. सो दैट्स व्हाई आई बाय अ पुट. देन मार्केट बाद में वो 50% जाएगा, 60% जाएगा, वो इट डजेंट मैटर. आई हैव अ पुट, आई एम नॉट प्लेइंग अराउंड विद दैट. सो आई एम वेरी यस. श्योर ऑन दैट. उसके लिए मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा. इफ आई बाय यू बाय इंश्योरेंस, यू हैव टू पे द प्रीमियम. राइट. सो मेरा जो नेट यील्ड जो था पहले 120 रुपया था, वो कम हो जाएगा. 100 रुपीज आई एम बाइंग अ पुट, सो नेट यील्ड मेरा सिर्फ 20 रुपीज मिलेगा, बट नीचे का मेरा फुल प्रोटेक्शन रहेगा. तो अभी ये करेक्ट. स्ट्रेटेजी में रिटर्न कहाँ से आएगा? देयर आर टू सोर्स ऑफ रिटर्न्स. वन सोर्स ऑफ रिटर्न इज कि आपने जो प्रीमियम इनिशियली मिला, देयर इज अ डिफरेंस, कॉल और पुट का जो डिफरेंस है वो, दैट इज द अपफ्रंट प्रीमियम यू गेट. सो राइट सर. दैट मच यू मेक. On top of that, if there is a upside participation, if the stock goes from 2000 2250, I'm going to get that profit also. अपसाइड. राइट So सर. upside participation. So दो चीज से मुझे प्रीमियम में रिटर्न्स आते हैं. रिस्क कहाँ से आता है? मैंने नीचे का डाउनसाइड कैप तो किया, मगर तब तक का तो मुझे लॉस लेना पड़ेगा. करेक्ट. तो जितने स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नीचे रहेंगे, उतना लॉस रहेगा. राइट. Right. So that way, there is the market participation is also there, and that is also the source of the returns as well as the risk. But there are the way it has been structured, there are other levers, like we have kept arbitrage fund also into the mix, arbitrage strategy also mix. So basically, अगर market is not that good or market is in a very bearish phase, then we can increase our allocation to the arbitrage strategy. So अपना अपना प्रोटेक्शन आ जाएगा. Then there is a debt into the mix. So मोटा मोटी let's say अपना participation in the market will be around 25-30%. That means till in the band. अगर मार्केट 3-4% ऊपर जाता है, मेरा पार्टिसिपेशन 25-30% रहेगा. नीचे -1% तक, ब्रॉडली अराउंड -75 या 1% मार्केट गिरता है, स्टिल आई विल बी फ्लैटिश. उससे ज्यादा आएगा तो 1% से लेके अगर 3-4% मार्केट गिरेगा, तब तक मेरा लॉस एक्यूमुलेट होगा. अगेन राइट. पार्टिसिपेशन विल बी स्टिल 25-30%. बियॉन्ड दैट देयर राइट. विल बी नो पार्टिसिपेशन. राइट. सो आई थिंक सर, पहला बात तो मुझे मेरे
NISM 13 के दिन याद आ गए, जब हम लोग एग्जाम की पढ़ाई कर रहे थे और कॉलर स्ट्रेटेजी पढ़ रहे थे। उस समय हम लोगों ने बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा था, अभी आपने उसको लाइव समझा दिया कि आप कैसे कर रहे हो। क्लियर है कि आपने अपसाइड को भी अपना कैप कर दिया, डाउन साइड को भी अपना कैप कर दिया। नाउ द स्टॉक मूवमेंट विच इज हैपनिंग इन बिटवीन इज डिसाइडिंग योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो अगर हमारा अंडरलाइंग स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा अपसाइड पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर फ्लैट रहता है तो नेट प्रीमियम अर्न हम जो कर रहे हैं उससे हमारा रिटर्न बन जा रहा है। और वही अगर डाउन साइड जाता है तो टू सम एक्सटेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट ऑल्सो, विच इज द सोर्स ऑफ रिस्क। सो जैसा कि आपने बताया कि वाइल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपने 10% अपसाइड का कॉल बेचा था और आपने अराउंड 15% डाउन साइड का पुट खरीदा था, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप लोग शायद वो नहीं करते होंगे। आप लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो में स्पॉट के सामने आप तीन शायद। 3-4 टका ऊपर का रहेगा और 5 टका नीचे का रहेगा, वैसा रेंज में रहेगा। करेक्ट। सो आई थिंक सर, इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, कि अगर मार्केट अचानक से अगर एक दिन के अंदर में झटका मारे, let's say market goes down by 2%, for example what we saw 2 days back, on I think on 8th of July, market suddenly fall by 2%, तो definitely उस पे आपके प्रोडक्ट के रिटर्न्स पे एक इम्पैक्ट आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, राइट? Yes, yes, definitely. Again, technically speaking, it also depends on from where it is coming from, at what stage it is coming, right? ओके। So, for example, initially market has already run up, say 7-8%. करेक्ट। So, I'm already out of my exposure to the market will become very less as we move यस towards our the strike price on the upside or on the downside. Our participation will keep on reducing, यस यस right? यस। So, if we are, let's say, already up 10% in a month, we are करेक्ट। almost at the delta, which is zero, which is my participation would have become close to zero because my uh, अपसाइड इज call कैप। call and stock price would have been working in sync, एक करेक्ट। साथ मूव करेक्ट। करना चालू कर देंगे, राइट? उसमें अगर 2% का नीचे आएगा कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। पार्टिसिपेंट दिखेगा, एंड दैट्स व्हाई अगेन ये स्ट्रेटेजीज, अंडरलाइंग स्ट्रेटेजीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेली हाउ वी जज एज अ फर्स्ट थिंग क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक मार्केट मीन्स मार्केट का डेली रिटर्न निकालते हैं, एनी फंड का एनएवी निकालते हैं डेली रिटर्न का, एंड देन वी सी कोरिलेशन, राइट? बिकॉज दोज आर ऑल लीनियर प्रोडक्ट्स। यस। यहाँ पे देर इज कॉम्प्लेक्स, देन यू विल गेट के ये कैसे हो गया। करेक्ट। Actually, doing some analysis of some fund, I was seeing मार्च में पहले दिन मार्केट 1.5 टका गिरा था किसी, दिस वन फंड, उसका पार्टिसिपेंट कुछ ज्यादा था इन दैट ओके। फंड। 5 दिन बाद मार्केट 3 टका गिरा, उसमें उतने पार्टिसिपेशन नहीं था। राइट। सो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग क्या हो रहा है, देन आई रियलाइज कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू प्ले आउट, राइट। राइट। राइट? तो राइट। अंडरलाइंग, वो अंडरलाइंग समझना काफी इंपॉर्टेंट, एंड इट विल नॉट बी सिंपल जॉब ऑफ के आपने एक्सेल में एक मार्केट का रिटर्न निकाल लिया और आपने एनएवी का डेली रिटर्न निकाल दिया और कोरिलेशन क्या है, अ, उससे आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखो, मैं आपकी स्ट्रेटजी समझता हूँ और बहुत टेक्निकल डिस्कशन अभी आपने हमारे साथ किया, एंड थैंक यू फॉर दैट। बट फॉर लेमैन इन्वेस्टर, लेमैन इन्वेस्टर जिसको कि समझाया गया कि देखो ये आर्बिट्राज प्लस प्लस कैटेगरी है प्रोडक्ट, लेट से, ठीक है, और वो उसी माइंडसेट से आ रहा है कि यार चलो हाँ, मैं इस पे पैसे रखूंगा तो मैं आर्बिट्राज अगर 6 साढ़े 6 देता है तो शायद मैं यहाँ 7.5 8 बना लूंगा। यस, So what kind of drawdowns? Again, I'm using the word drawdowns and not यस, यस, permanent falls. So what एब्सोल्युटली। kind of drawdowns can one expect? And considering the fact कि आप पिछले 19 साल से यही कर रहे हो and you have seen different types of markets, तो आपने सर क्या एक्सपीरियंस किया ऐसे स्ट्रेटजी के अंदर? ड्रॉडाउन के लिए ना, मेरा एक्सपेक्टेशन है 4 से 5 टके से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए। Absolute. व्हेन आई, हाँ, एब्सोल्यूट, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट नंबर, मैक्स Okay. ड्रॉडाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay. एंड मेरा बैक टेस्ट में तो कम ही दिख रहा है, बैक टेस्ट में आई थिंक Right. 2.78% was the max drawdown seen, and Okay. I'm talking more on monthly basis. Okay. So 3 to 5% ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, Mm-hmm. दैट्स माय एक्सपेक्टेशन। And again on the upside, sir. अपसाइड 8 से 10 टका जैसा is what on average what we are expecting. There is a possibility that is, let's say 70% of time it will be in that range. There will be 10-15% where it could be more than that also. And then 10-15% where it could be less also.
सो इफ आई So, अंडरस्टैंड दिस करेक्टली सर, मतलब मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि क्योंकि आपने 19 साल से ये काम किया है, सो यू आर सेइंग दैट ओके आई हैव सीन अ मंथ जब मार्केट लेट्स से 20% भी गिरा है, राइट? लेट्स से गो बैक टू मार्च 2020, मार्केट एक महीने में 20-25% भी गिरा है, तो परहैप्स जो डाउनसाइड ये प्रोडक्ट दिखा सकता है वो शायद, ऑल्दो दैट इज अगेन अ वेरी नॉट नॉट अ राइट एग्जांपल टू यूज बिकॉज दैट वाज अगेन एन abnormality ऑफ द मार्केट, इट्स एन आउटलायर, बट लेट्स टॉक अबाउट कि चलो एक महीने में मार्केट कभी कभार 5-6% गिर जाता है, इन दैट सिनेरियो परहैप्स आप जो डाउन साइड देख रहे हो वो शायद 2-3% का देख रहे हो। नहीं, सो ऐसा, अगर मार्च 2020 देखेंगे तो इट वुड बी अराउंड 2.5% टाइप्स। ओनली या 2.5, एज आई सेड, देयर इज अ मैथ्स बिहाइंड इट कि मेरा सपोज 60% एलोकेशन रहेगा, पुट्स कवर कर रहा विच था इज या इन मार्च 2020 इट वाज नॉट दैट हाई। मार्च 2020 में आई थिंक 40% जैसा एक्सपोजर था मार्केट में। बट सपोज 60% है, फॉर सम रीजन आई हैव वेरी हाई एक्सपोजर टू दैट कॉलर स्ट्रेटेजी, आफ्टर दैट देयर विल बी, उसमें लॉस हो गया 20%। एंड एज आई सेड उसमें 4% मैक्सिमम लॉस है मेरा इन दैट स्ट्रेटेजी। सो फ्रॉम दैट स्ट्रेटेजी आई विल गेट 2.5 2.6% लॉस। पकड़ लो कुछ गलत हो गया और 3% लॉस वहां से आ गया। हम्म। आर्बिट्राज इज अ फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट, 15-20% उसमें है फिक्स्ड इनकम में अपना, और 30% है, तो वहां से 25 30 40 भी आ जाएगा। तो आपका नेट रिटर्न फिर वो 2.5% जैसा मैक्स लॉस हो जाएगा। 20% गया तो फिर भी वहीं पे है। सो ओके एक महीना नीचे जाके मार्केट ऊपर आ जाता है, देन इट्स फाइन, बिकॉज उस महीने में 2.5% लॉस होगा, दूसरे महीने में अगर बाउंस बैक कर लेता है 10%, आई विल मेक दैट 3.5%। नेक्स्ट महीने में धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, देन आई विल मेक अप फॉर दैट इन नेक्स्ट राइट सर। some month. What most of the backtests will not show, and why means arbitrage also we have kept in place, is not taking into account 2020, taking into account what happened in 2008, which is none of the backtests go that back. या यस तो 2020 वाला पीरियड तो एक महीना नीचे है, फिर ऊपर आ गया तो ठीक है। देन एवरी बैक टेस्ट विल शो दैट कॉलर स्ट्रेटेजी गिव्स यू 12% रिटर्न, आर्बिट्राज गिव्स 6-7%, देन व्हाई टू कीप आर्बिट्राज एट ऑल। बट एग्जैक्टली 2008 का मार्केट ऐसा था कि कंटिन्यूसली 10 महीना मार्केट नीचे जा रहा है, एक साल नीचे जा रहा है मार्केट, वो सिक्सटी यस सेवेंटी परसेंट का ड्रॉडाउन, एंड नो वन कैन से दैट आगे नहीं होगा। सो कैन यस सर। एंड दैट्स द आउटलायर, दिस दैट इज ट्रेडिंग में ना, आउटलायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके इन्वेस्टिंग करते हो आप, तो क्या होता है कि आपने 10 स्टॉक खरीदा है, एक स्टॉक अगर आपका मल्टी बैगर निकल गया, देन यू आर फाइन, बाकी के दस सारे स्टॉक पास जीरो गए। भी हो जाएंगे तो फिर भी यू हैव मेड इनफ प्रॉफिट इन दैट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। यस ट्रेडिंग में उल्टा होता है, when you do 100 stocks, 100 trades, each expecting let's say 0.3 0.4% रिटर्न, एक गलत हो गया जिसमें आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, तो बाकी सबका पूरा लेके जाएगा। तो स्पेशली ऑप्शन सेलिंग आउटलायर स्प्रेड। इज वेर यू विल हैव टू, you have to account for it, or you have to plan for it. राइट राइट। ओके ओके आई गेट इट सर। अच्छा सर, आपने बहुत क्लियरली समझाया कि देखो इट इज नॉट दैट माय प्रोडक्ट इज रनिंग 100% ऑन कॉलर स्ट्रेटजी, हम आर्बिट्राज स्ट्रेटजी से भी रिटर्न बना रहे हैं जिसका डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है या नहीं के बराबर है, एंड हम कॉलर स्ट्रेटजी से भी रिटर्न बना रहे हैं। Right. सो द मतलब ऑन व्हाट बेसिस डू यू डिसाइड कि मेरा 100 में 50% पैसा आर्बिट्राज स्ट्रेटजी पे वर्क करेगा और 50%, आई मीन व्हाट इज द रेंज दैट यू कैन प्ले विद, what kind of a So, market will tell you कि अभी ये range play करना है, I mean so something on that side sir। so typically, there is, based on the model, 5 to 70% is the range we are spelling. So practically, collar strategy में minimum 5 to 10% रहेगा, आर्बिट्राज में मिनिमम 5 to 10% रहेगा, बाकी का 50-55% आपका अदर स्ट्रेटेजी में रहेगा। द वे वी सिलेक्ट अबाउट इट इज अ मॉडल, इज दैट मॉडल अंडरलाइंग थीसिस के अंडरलाइंग रिटर्न्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द यील्ड विच वी आर मेकिंग ड्यूरिंग कॉल एंड पुट, एंड सेकंड थिंग इज द मोमेंटम in the market, that is upside participation we want to capture in the maximum number of stocks. So when the markets are on the upside, more stocks will have momentum. So more stocks will get filtered in. At the same time, that yield, which works as a kind of a dampener to it, it doesn't allow it to go too much into one side.
And so based on those parameters, we select a stock. Each stock has around 2.5% weightage. So more number of stocks get selected, your weighted to collar strategy increases, which is the happens in the good market. And the less number of stocks get selected, which happens in the bad market, your stock weightage reduces, or collar weightage reduces. So in a way, it's a very simple way to do it, not too complicated. Thanks. सर आई जस्ट वांट टू अगेन अंडरस्टैंड कि आई थिंक हम लोगों ने जिस तरह से इस प्रोडक्ट को पोजीशन किया है कि दिस इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज suitable for people who are looking for an FD plus plus kind of an experience, Yeah. provided they are coming here for at least 18 to 24 months, Hmm. right? So, I'm sure आपने बैक टेस्ट भी किया है, आपने लाइव मार्केट्स भी देखे हैं. Then, what is the kind of returns that one can normally expect? I mean, who knows market क्या behave करेगा, but in your textbook scenario, what is the My returns one can? expectation, as I said, is 8 to 10% is my expectation. 60, 70% time we would fall in that range. Then there is a 10% chance that it can also have an upside more than that if the market continuously keeps on rising like 2023 market, 2023 or probably 2020-21 market where the markets were on a very bullish phase. That time it has the potential of making much more than that. At the same time, when the markets are on a bearish phase or a subdued return phase, that time there would be subdued returns, which could be less than that also. But over a 2 3 year period, we can expect that market will be fairly either range bound or on the upside. So, Abhi sir, na, matlab, so we have seen all kinds of markets in the recent times. But let me particularly ask you that for a phase like the last 2.5 years that we have Hmm. seen, कि 2024 का मार्च पकड़ूं तो 24,000 निफ्टी था and आज भी 24,000 निफ्टी के आसपास है. So it's like 2.5 years of no returns versus arbitrage funds giving about 6% returns in the same time frame. So what is an ideal expectation of return from this kind of a product So in in this this kind see, of a market phase? so in this kind of market, no, this was not also this has been a range bound market, but still it has had movements. Yeah, So correct. the difficult phase started from October 2024, Yes. right? Till September 2024, market was on the upside. Yes. It was October 2021 when it started to fall first. So first month, obviously, it fell 6%. We had a loss, and our maximum loss also coincided with that because we had the exposure to the collar as a high because the market was on a bull phase. Right? So Yes. we had that drawdown, and then market was sideways, so we did not recover. We did not get chance to recover. It stayed till February 24 or something. February 25. So in the backtest, our maximum drawdown has come from October 24 to Feb 25, 5 months, which was Okay. around 2.78% number I quoted. That was from that period. Okay. From that onwards, we have started recovering. From October to December 2025, it had recovered. So it made money. It got chance to make money. It did make money in that period. Then again, I think January, February was also okay-ish period. March was again where the drawdown came in, where we were down 1.5% in the backtest. So there has been period in which it gets a chance in the range bound market to make money also, right? Uh, Okay. so it should, I mean, we would still be better than arbitrage during that phase. Okay. Okay. So generally, sir, हम क्या कहते हैं, and this is something that I am thinking aloud and deducing basis your conversation, कि generally हम जब equity markets के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो when the markets are trading at a discount to their long term averages, that is where you have a higher probability of making a superior return, above normal return over the next 3 to 5 years. This is what we say कि let's say market का long term अगर price to earning ratio मान लीजिए 22-23 के आसपास का है, और करंट मार्केट अगर मान लो 20-21 के पी पे चल रहा है और इस समय आप पैसे लगाते हो तो अगले 3 साल में आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो कि यार 12 की जगह मैं 14 बना लूंगा. जैसे हायर प्रोबेबिलिटी टू इट. तो सिमिलरली आई कैन से दैट लेट्स से इवन इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, अगर कोई बंदा कहता है मुझे इक्विटी नहीं खेलना है, आई एम एन एफडी कस्टमर एंड आई वांट टू गिव यू मनी इन सिमिलर रिस्क प्रोफाइल प्रोडक्ट, तो perhaps if the markets are trading at a discount and we take money in this kind of a strategy, we can very well assume कि हाँ यार जो आप कह रहे हो कि 8 से 9% का रिटर्न हम बना सकते हैं, तो दिस इज अ वेरी मच अचीवेबल गिवन द फैक्ट दैट द मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट एंड लुकिंग बेटर इन द नियर टर्म. Yes, absolutely. I agree with you on that part. That I would be more confident in this thing that to achieve that 8 to 10% number
for me, as I said, average probability is 70% kind of where we would achieve that number in 1 year period. In this kind of scenario, I think that probability is much higher. That's why I'm So, not so so confident. मतलब sir, अगर मतलब if I were to pitch this product versus balance advantage fund as a category. No, so this is not a product should be pitched against the balance advantage fund. This is a product to be pitched against your equity savings fund arbitrage. Okay. Because balance Okay. advantage fund has much more participation. They have around 50 Yes. 60% participation in the market. Yes. Our Yes. participant will be in the range of 25 30%. सो बेसिकली आर्बिट्राज फंड हम एक पकड़े, फिर हम हाइब्रिड कंजर्वेटिव पकड़े, उसके बाद हम आपके एसआईएफ को ले सकते Yes. हैं, एंड देन इक्विटी सेविंग्स Yeah. इज वेयर द Equity आइडियल स्वीट savings स्पॉट. fund would be similar, returns would be similar, because in the downside we will be much better protected than them, and on the upside we will have lesser participation, but on the downside we will be much better protection. So over a period of time, we'll have returns which will be similar, But better risk adjusted return. better मतलब risk standard adjusted. Yes, deviations would be lower. yes, And the best part, sir, is that when I compare this with a hybrid conservative, or let's say when I compare this with a FD as a category, so the tax advantage plays a very vital role. आपको equity absolutely. taxation मिल रहा है. आप एक साल के बाद अगर आप बेचते हो तो 12.5% का ही आपने टैक्स देना है. So even if In let's say our you, yeah, in our case, it's an equity product, so even less than 12 months, it is STCG, not a slab rate. correct, which is So 20%. yes, राइट. तो अगर 8 बना लेते हैं इन आइडियल सिनेरियो, आई एंड अप मेकिंग 8% रिटर्न, एंड इवन इफ आई हैव टू सेल इट आफ्टर लेट्स से 18 मंथ्स, तो मैं 12.5% टैक्स पे कर रहा हूँ, तो माय नेट ऑफ टैक्स रिटर्न वुड बी अबाउट 7%. yeah, बेसिकली फॉर लेट्स से एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपना पैसा लगाते हैं, एंड वो 7% ग्रॉस बनाते हैं एंड 30% टैक्स पे करते हैं, नेट ऑफ टैक्सेस उनके हाथ में 5 आता है. So I can clearly say that, look, I can kind of make a 7% post-tax return, which is an equivalent of 10% pre-tax for this category of yes, investors, which is like absolutely. a mind-blowing return considering the risk profile of the Yes. product itself. Perfect. So I think if I were to, sir, summarize this, that can I say that this is a product which can be given to any and every investor because asset allocation is an important part for everybody. Yeah, I completely agree with you. This is a product which is, I do not think it is a product for certain kind of individual or not for another kind of individual. This product is a perfect fit for the conservative side of the portfolio. Every investor has a conservative side, maybe in equity, maybe in debt, maybe in FD. They do have. No one has completely invested in the small cap funds. Right, There is sir? always some part in the conservative side, and this is a perfect place. This is a perfect fit for that part of the portfolio. राइट. सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, सर. आपने बहुत अच्छे से इस स्ट्रेटजी को डिकोड किया, बिकॉज ट्रस्ट मी सर, व्हेन आई स्पीक विद लॉट ऑफ fellow practitioners and when I talk to most of the investors, they are excited about this opportunity, they're excited about this product, but hardly anybody talks in depth about how the returns are made and what are the sources of risk, जो कि आपने आज बहुत अच्छे से कवर किया है. So I'm sure this is going to be very very beneficial to every person who hears this particular interview of yours. So thank you so Right, much, sir. sir. Once again, Thanks. I can just summarize कि any investor who is looking for a conservative experience, who's from a conservative risk profile, or let's say even if he's aggressive, but उसके asset allocation के part में उसको कुछ debt का allocation चाहिए, अगर वो 18 से 24 महीने के लिए आ रहा है, looking at a better after tax return, then perhaps this is one product which we can place somewhere near equity savings category, but with a lower downside, and hence giving you a much better risk adjusted return. Typically, if everything remains an ideal scenario, तो मैं 8 से 9% का रिटर्न इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, Yeah, which I think is a fabulous return for a for a product of this kind of a risk profile, sir. perfect. Yeah, thanks, sir. And I think one more point to add, sir, कि I Yeah. had interviewed Swaroop sir also before, and I Okay. understood the mindset of Mirae as a asset management company, that you guys are actually very conservative. You guys are very thoughtful about what you are doing, and that again comes from your Korean culture. So अगर सोचना है कि somebody who is actually taking risk seriously and playing out these kind of strategies, then perhaps people like Mirae is who I would actually be trusting upon. कि हाँ यार, they would be doing what they are saying. Yeah, thanks. Thank you so much, Gaurik sir, for Thanks, your sir. time.
I look forward to hosting you again, maybe after a few months once Same. we have more experience with this product, sir. Would be my pleasure. This was also a very pleasurable interaction. So yeah, thanks a lot. Right, sir.